and we'll give the baton to none other than Marjorie Prandi to kick off the meeting today. Please Thank help me welcome you. Marjorie Prandi. Hello. Good morning, my friends. How are you? We've had such an interesting mishap this morning as we're at the Shakespearean Festival in Cedar City, Utah. Gunjan, I'm so happy my voice is here. I was having a lot of difficulty logging in. The cute women from the front desk came in and they were helping me. Anyway, so excuse me, Margie, I will make you the host. I'll be here for a short time today. Okay. So I'll just make you the host. There you are. Okay, Please. thank you very much. Do I need to accept it or did it just do it? Anyway, my friends, so coming in from Cedar City, Utah today, and really excited to be with you. Do you, let's see, want to go ahead and just mute the lines? I guess I can mute all. There we go. Everybody muted. I mean, might need my glasses if I need to do that. Anyway, my friends, I'm so happy to be with you. Sorry that we're getting just a little bit of a late start, but I'm really excited about this conversation because in talking with some of the leaders while I was in India, I could see that they have an incredible command of the product and that they're doing a great job getting the word out there. And yet sometimes there's a gap, like doing all the right things, but still not closing sales, still not building volume. And so I wanted to bring together all of the pieces that I think are essential to share them with you today to help you tweak your process so that you are more effective in attracting customers, in keeping them, and in keeping them forever, and even in encouraging those customers to share. Gunjan. Good evening, everyone. So let's start. जो मैम ने हमें समझाया है कि she is very excited today. आज वो बहुत excited हैं मीटिंग को लेकर और वो बता रही हैं कि जब वो इंडिया में आई थी तो वो काफी लीडर से मिली थी जो काफी जिनसे उन्हें मिलकर काफी अच्छा लगा था और they have good command over products, but हमें सेल में प्रॉब्लम आती है हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि जब वो इंडिया में आए थे तो काफी अच्छे लोगों से लीडर से मिले थे जिनकी कमांड्स है काफी प्रोडक्ट नॉलेज में और बट सेल में हमें वो समझाना चाह रहे हैं, इसलिए वो हम सबको इकट्ठा लाए हैं, सभी कंट्रीज हम सबको मिलकर समझाना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम कस्टमर को अपने साथ लॉन्ग टाइम के लिए जोड़ कर रख सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाएं और उनको किस तरह से बताएं कि हमारे प्रोडक्ट्स या मॉडल के बारे में कि वो कैसे लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और रिटेन रहे हमारे साथ। यस मैम। So I want everyone to join me in giving Gunjan a hand. Is she absolutely incredible? Thank you so much. Thank you, You're phenomenal. I appreciate you so much. So my friends, the first thing is that you, as you know, people will do business with those that they know, like, and trust. And if you're working with somebody that doesn't know you very well, the first thing you can do is to engender trust with them. Number one, you need to be an expert. So you need to show confidence. You need to show a little bit of posture, like you know what you're talking about. But the second, and probably the most important thing, is that you need to genuinely care. When people know that you care about them, they open their hearts to you. They open their minds to what you have to say when they know that you genuinely care. So having the posture that you're confident, you can help them. And you put that across, and then you show them that you genuinely care by taking time and asking questions. Gunjan. तो मैम कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं कि हम किस तरह से कस्टमर को लॉन्ग टाइम तक अपने साथ रख सकते हैं। फर्स्ट शी इज सेइंग वी नीड टू एक्सपर्ट, हमें अपने काम में एक्सपर्ट होना है, मतलब कि जिस तरह से हम उन्हें दिखना चाहिए कि क्या हमारा जेंडर है, किस हिसाब से हमें मेल है फीमेल है, सामने वाले की पर्सनैलिटी देखकर उस हिसाब से हमें अपना पोस्चर देना है, उस हिसाब से उनको मतलब कंफर्ट फील कराना है। और नंबर 2 जो मैम बता रहे हैं कि हमें उनकी केयर करनी है, जेन्युइन केयर। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमें हमारी किसी से बात हुई, हमने उन्हें प्रोडक्ट दिया
तो हमें उनके टच में रहना है, उन्हें लगना चाहिए कि हम उनके लिए एक वरीड हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें रिजल्ट मिले और इसके लिए तो तभी वो हमारे साथ ओपन माइंड होंगे, दे विल बी ओपन हार्ट और दे विल शेयर देयर थिंग्स। वो हमसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जब हम उनके साथ उनके केयर करेंगे और उनके क्लोज रहेंगे। तो यही मैम बता रहे हैं कि आपको उनके साथ एक अच्छा पोस्चर देना है, एक्सपर्ट की तरह प्रेजेंट करना है खुद को और उनके साथ एक जेन्युइन केयर की तरह उनके सामने आना है आपको। यस मैम। So my friends, when I first started building this business, I made some errors while I was learning. And I remember one of the things that I did wrong is that I felt like I needed to impress my potential customer or my potential social marketer by talking a lot and showing how much I know. And it put a lot of pressure, and it actually was the absolutely wrong thing to do. Gunjan. तो मैम अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। व्हेन शी स्टार्टेड एंड शी मेड अ मिस्टेक, उन्होंने क्या गलती की थी, वो कस्टमर को अपने सोशल मार्केटिंग को इम्प्रेस कर रहे थे कि और अपनी ज्यादा बोल रहे थे, अपना मतलब ये दिखाना चाह रहे थे कि उनकी शी हैज गुड नॉलेज एंड शी इज एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ। और उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो जितना ज्यादा बोल पा रहे थे तो कस्टमर मतलब कंफ्यूज हो रहा था। तो मैम बता रहे हैं कि ये उन्होंने एक मिस्टेक की थी। तो लेट्स सी आगे क्या हुआ। यस मैम। So when I learned that doing business is as simple as learning how to ask good questions, everything changed for me. The fact is, you don't want to do a lot of the talking. You need to listen because you need to know what their needs are. You need to help them you need to help them find solutions to their health problems. If you're doing all the talking, you have no idea what their desires are, what their fears are, what's keeping them up at night because they're so worried about some part of their health. If you don't ask the right questions and keep asking questions, you will never know what their need is. And so it's like trying to shoot at a target that you don't even have. You must know what the needs, concerns, desires, and fears of your customer are. तो मैम नेक्स्ट बता रहे हैं कि जैसे मैम कह रहे हैं कि उन्होंने गलती की, वो सिर्फ अपने बारे में ही बता रहे थे, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमेशा अपने सोशल मार्केटर से बात करते थे, कस्टमर से बात करते थे। तो मैम चाह रहे हैं कि हम ये मिस्टेक ना करें, हमें अपने कस्टमर से उनकी बात ज्यादा सुननी है, उन्हें क्या इश्यूज हैं, व्हाट आर देयर हेल्थ इश्यूज, व्हाट आर देयर फियर, व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स, यू जस्ट लिसन टू देम, आस्क मेनी क्वेश्चन। आपको उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि उनको आपके साथ कंफर्ट फील हो सके और अपने बारे में कम डिस्कस करना है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं। पहले जितना हो सके हमें उनकी बात को सुनना है ताकि वो आपके साथ कंफर्ट हो सके और आस्क देम मोर एंड मोर क्वेश्चंस, उनकी लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, जो भी उनका फियर है, ताकि उनका जो डर है वो दूर हो सके आपसे लेकर या प्रोडक्ट से लेकर। यस मैम। This is the way that you build rapport, by asking questions and listening. So if the person you're talking to, if you don't know them very well, I would say, hey, before we jump into all the stuff we're going to talk about keeping you 100% healthy, give me a little bit about your background. Tell me about your family, right? So build rapport by getting to know who they are, a little bit about their surrounding setting, what they do for their occupation, so that you can have a foundational understanding of who they are. Now, obviously, if you already know them, then you can skip this step. Gunjan. तो मैम जैसे बताया कि हमें ज्यादा से ज्यादा उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं इससे पहले कि हम अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें और उनसे आप डिस्कस कीजिए व्हाट अबाउट देयर बैकग्राउंड, उनका फैमिली इशू है, हेल्थ इशू है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या उनसे आप उनका ऑक्यूपेशन पूछ सकते हैं, क्या वो किस बिजनेस में है, किस पर्पज से वो आपसे मीटिंग के लिए आए हैं। तो मतलब बिफोर जंपिंग इनटू द मीटिंग आप उनसे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस है अच्छी तरह से पहले उस पे आप क्लियर कीजिए, फिर आप अपना व्यू रखिए उनके सामने। यस मैम। And so after you've established some basic understanding and built a little bit of rapport, you want to start asking them about their health concerns. Now, sometimes people are a little timid, and it might take you really establishing a listening heart for them to open up, but sometimes they're very forthcoming and they just want to tell you everything. So your job is only to listen and ask the questions. So you will ask them questions like, what are your most serious
health concerns right now. Like, I would recommend that you take notes on this so that you can memorize all of these questions, that when you're sitting with someone, you can just pick them right out of your brain. So memorize these. What are your most serious health concerns right now? So maybe they say, I just need to lose some pounds because, or maybe they say I have diabetes, or maybe they say I have no energy, or maybe they say I have gut health, gastro issues. Whatever it is, you say the words, tell me more about that. How is it impacting you? What are the issues that are cropping up in your day-to-day life because of this challenge, right? Dig in a little bit. Gunjan. तो नेक्स्ट जब आप उनसे बात करेंगे या उनसे आप उनकी बात को आप सुनेंगे अच्छी तरह से, जस्ट आपको पहले उनकी बात को सुनना है. देन योर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाट आर मोस्ट हेल्थ कंसर्न. आपको जो उनसे रिलेटेड हेल्थ इशू है उनसे वो पूछना है कि उन्हें हेल्थ से रिलेटेड क्या इश्यूज है. लाइक इट कैन बी डायबिटीज और हार्ट हेयर इशू और समथिंग एल्स, वेट लॉस. जो भी उनका इशू है आप उनसे पहले पूछिए, फिर उनके बारे में आप उनसे आप बोलिए जस्ट टेल मी मोर. आप उनका डेली डे टू डे रूटीन डिस्कस कीजिए कि आप पूरा दिन कैसे खाते हैं, क्या क्या लेते हैं अपनी डाइट में. तो आप उनका पूरा डाइट प्लान देखिए, वो कैसे, उनका लाइफस्टाइल कैसा है. उसके बाद आप डिस्कस कीजिए कि आप उनके साथ उनकी किस तरह से इसमें हेल्प कर सकते हैं. यस मैम. So understand what's happening in this process. You are taking the sales process from being a sales process into being an interview. You are essentially interviewing them. So the most important thing is, don't jump into the solution until you have a lot of information. If, for example, they say, weight loss, I'm so sluggish. I can't stay awake at night. I can't get down on the floor and play with my kids. I'm so just exhausted all the time because of all of this weight. Now you know that they also have some underlying issues with energy, right? So you want to deeply ask all of the questions before you move to a solution. Gunjan. तो मैम ये बता रहे नेक्स्ट कि हमें एकदम से सोल्यूशन पे नहीं जाना है. पहले पूरी डिटेल हमें उनके बारे में नोट करनी है. आप पेपर पे नोट डाउन कर सकते हैं कि उन्हें क्या इश्यूज हैं. जस्ट लाइक उन्हें अगर वेट लॉस करना है, या वो टायर्ड रहते हैं, या वो मतलब उनको मन करता है अपने बच्चों के साथ खेलने, लेकिन वो इतने थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि वो उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो खेल ही नहीं पाते हैं. तो उनका जस्ट हेल्थ इश्यूज आपको कंसर्न करना है, और फिर धीरे धीरे आपको उनको अपने बारे में बताना है, कि अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है कि किस तरह से आप उनको लाइफ में किस तरह से चेंजेस ला सकते हैं. यस मैम. Notice in this dynamic too, that you're actually setting up you as an expert, right? Why would they be telling you all of their concerns if you weren't the expert that is going to help them solve, right? So you might even write like in a book, take some notes, right? So that they know you are literally going to be by their side, help them monitor their health, help them break through any health challenges, and you are by their side for the duration. So you'll ask even more questions. Okay, so you're having issues with like weight loss. What kind of foods do you think you're eating that are not productive for you, that are not good for you? How late do you eat at night? When do you start eating in the morning? Like, just learn everything that you can about the details. Write it down. Can you see that you're building rapport? Can you see that you're establishing yourself as an expert who can help them? Gunjan. तो जब आप उनसे बात कर रहे हैं, उनके डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट हैव अ नोटबुक विद यू, जस्ट राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन. उनको लगना चाहिए कि वो किसी एक्सपर्ट के साथ बैठे हैं. आपको नोट डाउन करना है जो जो उनके हेल्थ इश्यूज है, उनको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि उन्हें ये ना लगे कि आप जस्ट उनके साथ बातें कर रहे हैं. तो जैसे कि मैम ने आप पहले बताया कि जैसे हम इंटरव्यू लेते हैं, एक इंटरव्यू की तरह आपको लेना है, उनका इंटरव्यू लेना है और उसको नोट डाउन करना है, और फिर उन्हें बताना है कि जो जो आपके हेल्थ इश्यूज आप लिख रहे हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं आपको, आस्क मोर क्वेश्चंस. और उनका जो डेली रूटीन है, आप वो फूड में क्या लेते हैं, वो रात को कितनी देर तक खाना खाते हैं. जस्ट लाइक उनका वेट लॉस कंसर्न है, तो वो कितनी देर से खाना खाते हैं, या सुबह क्या नाश्ते में लेते हैं. जस्ट राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स, आपको ये नोटबुक पे लिखनी है, और फिर उसके बाद आपको लास्ट में कंक्लूजन पे आना है कि इसका क्या इशू रहेगा. यस मैम. Now is the time when you're going to make some recommendations,
right? So first of all, you've gathered all of this information and you obviously have been listening. So they're going to trust what you're going to say because they've just told you everything. Last thing before you jump into recommendations, ask them. So just say, before I help you solve your weight concerns, before I do that, tell me a little bit about your general health. Do you sleep well at night? Do you have any gastro issues? How do you digest your food? Are you eliminating regularly, right? Like, you need to know these things. So you want to ask a few foundational questions first, and then you're going to say the words, okay, having gathered this information from you, here's what I'm going to recommend. Gunjan. तो जब आप उनसे सब इंफॉर्मेशन ले लेंगे, फर्स्ट कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, जब फिर आपको जो उनको रेकमेंड करना है, तो आपको पहले इनकी जेन्युइन हेल्थ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, उससे रिलेटेड आप कुछ और भी इश्यूज है जो आप पूछ सकते हैं, जैसे कि आजकल हमारा गट हेल्थ का इशू रहता है, कोई गैस्ट्रिक इशू है, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, तो आप इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछिए। फिर आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके पास इस रिलेटेड क्या, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। तो पहले आपको उनको अच्छे से सुनना है, फिर रेकमेंड करना है, और गट हेल्थ या गैस्ट्रिक इशू से रिलेटेड भी पहले सब कुछ पूछ लेना है, जस्ट लाइक अगर उनका वेट लॉस कंसर्न है, तो ताकि, क्योंकि ये इश्यूज भी प्रॉब्लम आते हैं हमारे वेट लॉस में, इसीलिए पहले इन चीजों पर भी आपको डिस्कस करना है। यस मैम। So they have now given you all the information that you need to be able to start suggesting solutions. And so you want to start with their primary concern first. Let's say that it was joint issues. So what I love to do is have my before and after pictures. I keep them all in the notes section on my phone so that I have them with me all the time. And I have them categorized by collagen. I have them categorized by hair, by skin, by weight loss, so that I can pull up some before and afters. And then I say, let me show you some of the other people that are benefiting from our products. Let me show you some of the results that they are getting, right? So you're going to start with some very compelling information before you go into the details about the product, before you go into the details about how they will take the product or how much the product is going to cost. You're going to show them some compelling information with before and afters. And I'll give you an example of this. So we were in Las Vegas last weekend for my son's 40th birthday, and we were talking to a couple at the swimming pool, and they were a total hard sell, right? Like they're in perfect shape. They didn't need anything. And I showed them some of the before and afters of collagen, which many of you have seen. And then I showed them Saroj, beautiful Saroj, the story of her mom. And if you haven't seen this video, you need to make sure you get this. Gunjan and Saroj have worked together to give an amazing video before and after, and it's like 2 minutes long. So they held my phone, they watched that, and they're like, I want that right now. So I didn't need to sell anything, right? Notice how this works. Questions show I haven't done anything yet except ask questions and show them the results people are getting. Now, I also noticed that his hair was thinning a little bit. So I said, look at all the things this product does. So I just quickly showed them a few other, the sale is done. And I didn't have to say anything. I didn't have to act smart. I didn't have to spew a bunch of details about the product, how it works. Notice how easy this becomes if you do things in the right order. Gunjan. तो उसके बाद मैम बता रहे हैं कि जैसे कि जब आप उनसे इंफॉर्मेशन ले लेंगे, उसके बाद मान लीजिए उन्हें कोई वेट इशू है, वेट लॉस का इशू है, जॉइंट इशू है, तो जस्ट शो देम बिफोर आफ्टर। आप उन्हें बिफोर आफ्टर दिखाइए। और इसके लिए ये क्या आप कर सकते हैं, आपके पास अगर पर्स है तो आप अपने पर्स में पिक्चर रख सकते हैं, जैसे मैम ने प्रिंट आउट रखा हुआ है अपने पर्स में, शी ऑलवेज कैरीज। और नेक्स्ट हम अपने फोन में स्टोर कर सकते हैं बिफोर आफ्टर पिक्चर्स। वी कैन हैव फोल्डर लाइक वेट लॉस एंड जॉइंट इश्यूज। तो ये फोल्डर हम जहाँ पे भी अगर हमें कोई ऐसा कोई हमसे डिस्कस करता है, तो हम उन्हें उसी टाइम में प्रोडक्ट्स अपने, देखो फोन हम सबके पास हमेशा होता है, तो हम उन्हें अपने फोन में अपनी गैलरीज में वो फोटोज हमेशा दिखा सकते हैं। दीज आर आफ्टर बिफोर ऑफ आवर कस्टमर्स। तो उन्हें एक लगता है कि फ्रॉड नहीं है, इसके पास जेन्युइन पिक्चर्स हैं, ये ऑलरेडी काम कर रहा है। तो ये इस तरह से हम उन्हें पहले आपको एक एश्योरेंस देना है कि आप राइट प्लेस पे हैं, राइट काम पे कर रहे हैं।
एकदम से आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, पहले उनको अपने प्रोडक्ट की पावर दिखाइए कि कैसे काम करता है, फिर आप धीरे-धीरे अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि मैम ने अभी एग्जांपल दिया कि लास्ट वीक शी वाज सेलिब्रेटिंग हर सन्स बर्थडे और वहां पर उन्हें कपल मिला था और उनको जो कुछ इश्यूज थे जिसके रिगार्डिंग मैम ने फिर उन्हें कोलेजन के बारे में बताया और मैम ने सरोज मैम की उनकी मदर की वीडियो दिखाई जो मैंने यूट्यूब पे भी डाल दी है, हील हेल्थ विद गुंजन, जिसको देखनी है वो देख सकता है। उनकी मम्मा की वो वीडियो है जिनको कोलेजन से काफी रिलीफ हुआ था, तो मैम ने उन्हें वो वीडियो दिखाई और अपने आफ्टर बिफोर की पिक्चर्स दिखाई और उन्हें कुछ हेयर का इशू था, उनके हेयर काफी थिन है, तो उन मैम ने बोला है कि जस्ट उसी टाइम ही मैम ने उनके अपना वहीं पर अपना कोलेजन सेल किया है। इसके लिए उन्हें कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं किए, जस्ट क्वेश्चन एंड शो, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं और उन्हें शो करने हैं रिजल्ट। तो इसी तरह से जब आपके पास मटेरियल ऑलरेडी होगा तो आप उन्हें कहीं पे भी अपने शो कर सकते हैं अपने रिजल्ट, जिससे वो उसी टाइम भी कंसर्न हो जाए आपके प्रोडक्ट से लेकर। यस मैम। So now if they've seen the cost of the product, or they're saying, how much is it? How much is it? Just say, hold on that because I'm going to show you how I can save you a lot of money. Let's talk about the whole product experience first, and then we'll jump to that. Or if they have seen the price somewhere and they said, I think I've seen that this costs so and so much rupees. I always just say, that's not your price. I'm going to show you how we can save. Let's put that aside for just a minute. Now is a great time for you to set their expectations accurately. One of the reasons that customers will come, try a product for a few weeks or a month and then leave is because you didn't set the expectations accurately. They need to know that when you start taking this product, you have spent 50 or 60 years breaking down your joints. The effects are not going to happen overnight. So I need to be sure that you're committed to your results. And if you are, and you're willing to go the distance, I will be by your side, helping you until you achieve all of the results you're looking for. So you're going to let them know that they're looking at a long-term commitment. You might even flip back to a couple of your pictures. For example, this woman, she didn't grow a full head of hair overnight. You know, this is, I'm sorry, I'm being a little non-compliant, but if you show them the picture of the gal that had alopecia areata, who's wearing a wig, now she has full hair, you can say, that didn't happen overnight. She made a year-long commitment. But can you imagine that this is how much this is worth to her, right? So you're setting the stage. I'm going to ask you to commit to the regimen that we will establish together for 90 days. 90 days. Within a few weeks, you'll start noticing some results, but fully commit for 90 days to give your body a chance to start using and utilizing these miracle products. Gunjan. तो नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, अब हमने इंफॉर्मेशन ले ली, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, तो नेक्स्ट हमारी जो टर्न आती है वो आती है कॉस्ट पे। दे विल आस्क यू कॉस्ट, तो आपको उन्हें समझाना है कि जस्ट वेट, और उसके बाद आप उन्हें ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि हमारा शेयर द लव या सेव शॉप एंड सेव है, तो आप उन्हें किस तरह से दिखा सकते हैं कि आप किस तरह से उनकी मनी भी सेव हो जाएगी। अगर आपको वो कहते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्टली है या हम इतना महंगा नहीं ले सकते, तो आप उन्हें ऑप्शंस भी दे सकते हैं और उन्हें प्राइस दिखा सकते हैं। जैसे हमारा moday.com है, वहां पर हमारा सब कुछ रहता है, तो आप उन्हें प्राइस के बारे में बता सकते हैं उन्हें। लेकिन मैम बताना चाह रहे हैं कि जब आप उन्हें देते हैं तो सिर्फ आपको ये नहीं देना है कि वो आप उन्हें बोतल दे रहे हैं, वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए उसे यूज करा और आपका कस्टमर चला जाता है। तो जब आप उन्हें देते हैं तो एक एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको देनी है कि डेफिनेटली आपको इससे रिलीफ होगा बालों में या जॉइंट पे, जो भी उन्हें इश्यू है, बट इफ रिजल्ट डजंट कम इन ओवरनाइट, दे हैव टू वेट। आपको उन्हें ये बताना है कि आप यू मस्ट हैव पेशेंस फॉर दिस। आपके पास पेशेंस होना चाहिए इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। विल टेक 90 डेज, आपको 90 डेज या 100 डेज का टाइम चाहिए। तो क्योंकि रिजल्ट जो है हमारे वो एक रात में नहीं आएंगे, जैसे कि मैम ने भी एग्जांपल दिया है, जो उन्हें कपल मिला था, तो उनके जैसे जो इनको हेयर इश्यू था, तो उसके लिए उन्हें कम से कम 90 डेज चाहिए, तो वो रातों रात रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ हमें प्रोडक्ट देना है कि आपको कम से कम 3 से 4 महीने तक इस प्रोडक्ट को यूज करना है, फिर आपको तब तक आपको रिजल्ट मिलेंगे। यस मैम। And so now is the time
to just in a very brief way talk about the products and how they work. And the reason you want to do this is because you want them to know they can't find any products like this anywhere on earth. You want to let them know that the collagen is patented and researched, that there isn't a product like this anywhere on earth. So you might start by talking a little bit about collagen, hyaluronic acid. You do not want to get too sciencey. You do not want to go too in depth, but you want to establish that this is a very unique product that they can only get by you. They already trust you because you've taken the time to gather the information. They're listening to your recommendations. They want the solutions that you're going to offer for them. Help them to understand without overwhelming them that these products are singular in the world. Gunjan. तो इसके बाद आप उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफ से बता सकते हैं फुल डिटेल में, जस्ट लाइक आपको पहले खुद ही प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लाइक जिस हम कोलेजन के बारे में बता सकते हैं, कोलेजन इज अवॉर्डेड एंड पेटेंटेड प्रोडक्ट, इट हैज हाइलुरोनिक एसिड, कंटोइटिन सल्फेट, कोलेजन टाइप 2। ये कुछ चीजें हैं जो हमें खुद भी समझनी है, लर्न करनी है, ताकि जब हम किसी पे बात करें तो हमारा एक अच्छा इंप्रेशन जाए, इम्पैक्ट जाए कि वी हैव गुड नॉलेज अबाउट कस्टमर, अबाउट प्रोडक्ट। तो अब जब आप उनसे बात करते हैं तो आप उन्हें प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली आपको डेप्थ में नॉलेज नहीं है, इट्स ओके, बट आप कुछ उन्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। जब वो अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे तभी वो आपसे सेटिस्फाइड हो पाएगा। फिर आप उन्हें कुछ ऑफर बता सकते हैं, जैसे हमारी ऑफर चलती रहती है, तो इस तरह से धीरे धीरे आपको उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। यस मैम। And then I want you to talk to them about how they're going to take the product. This is a really important next step. And I think sometimes people fail to do this part, and it's so important that they understand that they're going to be, say it's the collagen, that they're going to be taking this product morning and night. The instructions are on the label. They're going to take about a tablespoon in the morning and then tell them this. It's really important when you take your product that you hold it in your mouth for about 20 to 30 seconds, because the hyaluronic acid is absorbed sublingually. If you swallow it quickly, you're going to get a little bit less benefit. Still the product will work, but we want you to have optimal benefits. So you're going to take the tablespoon, put it in your mouth, and then just let it absorb for a short while, morning and night. Your consistency is very, very important, because collagen, liquid biocell, has about a 12-hour shelf life. If you take it in the morning and then about 12 hours later, you have a continuous flow of collagen. Help them understand how important it is to be consistent, how important it is to hold it in your mouth for just a short minute, less than a minute, and then also say, be sure to refrigerate it. This is the most heartbreaking thing. If somebody has spent this money on the product and then they don't know they're supposed to refrigerate it, they leave it out. So you want to go through all of these details and have them write these things down. Just say, I'm going to recommend you take some notes, either on a piece of paper or in your phone. Gunjan. तो जब आप प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, नाउ इट्स टाइम टू हाउ टू टेक प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। तो यही मैं बता रहे हैं कि लोग यहाँ पर काफी हद तक फेल हो जाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। और वी हैव टू टेक इट मॉर्निंग एंड नाइट 15 ml एवरी डे। और आपको जब इसे लेना है तो आपको मुंह में से होल्ड करके रखना है फॉर 30 सेकेंड। जस्ट होल्ड कोलेजन इन योर माउथ फॉर 30 सेकेंड, क्योंकि इसमें जो हमारा हाइलुरोनिक एसिड है वो जब उसका काम जो होता है वो जब आप मुंह में थोड़ी देर रखते हैं तभी होता है, वो ऑब्जर्व हो जाता है। लेकिन जितना इफेक्ट उसका आपके होल्ड करने से होगा मुंह में, उतना ज्यादा नहीं होगा अगर आप उसे डायरेक्ट ले लेते हैं। जब भी आप कोलेजन लेंगे तो मैम बता रहे हैं कि 30 सेकंड तक आपको अपने मुंह में उसको रखना है और उसके बाद आपको उसको पी लेना है। और इसके साथ साथ जो इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, हमें बाहर ही खराब हो जाता है। जो हमारा ट्रिम है और जो हमारा कोलेजन है, इन्हें हमें फ्रिज में रखना है आफ्टर ओपनिंग। जब ये आप खोल लेते हैं, जब तक आपका बंद है आप इसे बाहर रख सकते हैं, इट्स ओके, बट जब आप इसे खोल लेते हैं तो आपको डायरेक्टली इसको उसी टाइम में फ्रिज में रख देना है। और नेक्स्ट जो मैम बता रहे हैं कि ये बी कंसिस्ट, आपको इसको जब भी आप शुरू करते हैं लेना तो आपको इसके साथ कंसिस्ट रहना है। कि ऐसा नहीं है आप जस्ट हैविंग 2 days एंड लीव इट, आप इसे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं या आपका कोई इशू आ जाता है। तो जब भी आप कोलेजन या ट्रिम शुरू करते हैं तो बी कंसिस्ट आपको कंटिन्यू रखना है एटलीस्ट फॉर 90 days इफ यू वांट गुड रिजल्ट।
Yes, ma'am. Exactly. Now, I want to say this is the most important part, but they're all the most important part. They need to track their results, and you need to work with them to get them to do this, because the results in the beginning are so subtle that if they aren't tracking them, and if they haven't taken their before and after pictures, a month will come, even if they commit to 90 days, a month will come and they'll say, I'm not seeing any results. So what I like to do, many of you have seen the picture of my friend Jan Orton, who had fibromyalgia. Sorry, I'm just going to be really candid. This is an internal meeting. We can say some of this stuff. Who had fibromyalgia. And when I told her to take her pictures, she's like, I don't care what happens for my face. I said, but sometimes you'll see the result here first. We need to track everything. And so I'll even show my new customer the pictures of Jan before and after, and just say, notice that the difference is pretty profound, but it's not something you would notice if we didn't have this before picture of her, because it's just a little puffiness in her face and definition. And this was after 6 weeks in her jaw. Like, you can totally see it, but only if you're looking at it side by side. So I may even show that to them and say, you've got to track your results. You're going to take before pictures, find outdoor lighting without direct sun, face that light, take a picture from the front, from each side, and of the neck. You're going to take those 4 photos in good lighting. And they must do this, you guys, because truly the results are so subtle in the beginning. Gunjan. तो मैम ने बोला है कि सब जो भी तक अभी तक मैम ने शेयर किया है वो सब इम्पोर्टेंट है, बट द बेस्ट पार्ट इज की ट्रैकिंग. आपको जब भी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को देना है, आपको उनके साथ ट्रैकिंग मतलब ट्रैक करते रहना है, क्योंकि जब वो स्टार्ट करते हैं तो आपको उनका मेजरमेंट, अगर वेट लॉस के लिए पर्पज से वो ले रहे हैं तो आपको उनको ट्रैक पर रखना है, उनका मेजरमेंट पहले से ही लेके रख लेना है, क्योंकि आफ्टर 1 मंथ वो बोलते हैं कि हमें कोई रिजल्ट नहीं नजर आ रहा, वी डोंट सी एनी रिजल्ट. तो आपको पहले से ही उन्हें बिफोर आफ्टर के लिए रेडी कर देना है कि मान लीजिए जैसे मैम ने बताया कि अगर उन्हें कोई फेस इशू है तो उनकी आपको पिक्चर्स लेनी है इन ओपन, आपको साइड से, फ्रंट से, नेक से, गर्दन से भी पिक्चर लेके रखना है, ताकि जब आप 2 महीने बाद या 90 डेज बाद जब आफ्टर बिफोर दिखा सके उनके पास जो भी उनका इशू है, जैसे कि मैम ने बताया है कि उनके रिंकल्स हैं या जॉ लाइन का इशू है, तो जब भी आप 90 डेज के बाद या 30 डेज के बाद जब आप आफ्टर बिफोर ले सकते हैं सामने से, ताकि आप उन्हें बता सकते हैं देखिए ये इशू था, अब आपका ये इशू इतना कम हो चुका है. तो मैम वही कह रहे हैं कि आपको ट्रैकिंग पर रखना है अपने कस्टमर को, उनका पहले से ही मेजरमेंट लेके रखना है. अगर आपको लाइक बेली फैट के लिए लेना है या अपर आर्म के फैट के लिए लेना है, जिस इशू के लिए भी वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वहां से आप पहले से ही मेजरमेंट उनसे बोलिए कि आप वो लेकर रख लें. यस मैम. And so you also are going to have them write down, so they'll take their pictures. You can even do it with them there. You can have them take their pictures and then have them write in a little notebook exactly every 8. Okay, let's mute. Hang on 1 second. Somebody needs to be muted. Oh, maybe. Okay, I think we're good. And so you're going to ask them to track everything. For example, I have a little discomfort in my shoulder, and it's about an 8 on a scale of 1 to 10. How bad is that discomfort? My lower back, my knee. Have them even take a picture of old scars. I mean, like, they're going to notice all kinds of results. I wish I had a before picture of the scar I had on my chest, because I didn't even notice. But one day I looked in the mirror, maybe I'd been taking the product a year, and the scar that was all twisted and thick scar tissue was gone. So you could say, like, do you have any scars? Do you, you want them to track everything, because sometimes pain will come and go from our body. You feel it one day, and then it goes away. You don't even notice that it went away. You just notice that you don't have pain anymore, right? You didn't notice that it left. So you want them to track on a scale of 1 to 10, every area of discomfort in their body. Maybe they even take a picture of their hairline. If they're looking for hair results from collagen, maybe they take a picture of their scalp, right? But tell them they'll be getting all of these results, even if all they want
is more mobility. So you want to help them track everything, and you monitoring their progress. A big part of that is going to be, show me your tracking. Just let them know, I'm going to ask to see this so that I can help you tweak your approach so that you're getting the results you need. Gunjan. तो नेक्स्ट जो मैम बता रहे हैं कि जस्ट हैव पिक्चर्स, आपको उनके साथ टच पे रहना है, ट्रैकिंग करते रहना है। जैसे कि मैम बता रहे हैं कि जो भी उनका इशू है, जस्ट लाइक उन्हें शोल्डर में पेन है या बैक में पेन है, लोअर में पेन है, जहां पर भी उनका इशू है उससे रिलेटेड उनसे बात कीजिए। और अगर उनसे बात करते रहिए कि आपको कितना रिलीफ मिल रहा है। सपोज उनको हेयर का इशू है, उनको स्कैल्प का इशू है, तो आप उससे रिलेटेड उनकी पिक्चर्स लेकर पहले से ही रख लीजिए और आफ्टर बिफोर करते रहिए। आप उनसे पिक्चर्स मंगवा लीजिए और फिर 10 दिन बाद फिर मंगवाइए। तो आप खुद भी रिजल्ट को चेक कीजिए कि कितना आपको लग रहा है कि रिजल्ट आ पा रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैम यही कह रहे हैं कि आपको उनके साथ ट्रैकिंग करते रहना है। अगर वो वेट लॉस के पर्पज से ले रहे हैं तो आप इंची टेप से उनको कह सकते हैं कि आप इंचेस उनको मैसेज कर दीजिए कि यहाँ पर उनका कितना इंच आ रहा है, कितना फैट है। तो जस्ट लाइक जब आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो उनके साथ आप टच में रहिए और उनके साथ ट्रैकिंग में रहिए, ताकि उन्हें ये ना लगे कि डिस्कम्फर्ट है, कि वो नहीं, जहाँ पे भी उनको जो भी उनका डिस्कम्फर्ट एरिया है वहां कर आप पिक्चर लेकर रखिए। जैसे कि मैम ने उन्हें बताया कि उनको भी एक उनका जो चेस्ट पे उनको एलर्जी का था, जो स्किन पे जो इश्यू था, तो वो मैम ने नोटिस नहीं किया था। लेकिन काफी टाइम बाद जब वो कोलेजन लेती रही, जब उन्होंने काफी टाइम बाद देखा तो वो वहां से स्कार जा चुका था जो उनकी चेस्ट पे था। तो यही मैम बता रहे हैं कि उन्होंने नोटिस नहीं किया। इसी तरह से कस्टमर के साथ भी हो सकता है, वो नोटिस नहीं करता है लेकिन कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है कि हमें ये पेन था, हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी। इसलिए मैम चाह रहे हैं कि ट्रैक एवरीथिंग, सब कुछ आपको चेक करके रखना है। जिस जिस इश्यू से रिलेटेड आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे रिलेटेड आप आफ्टर बिफोर जरूर कीजिए। यस मैम। This is also a really fun and kind of good point where you can mention to them that there's actually a business here too. And so how that might sound is you can say, and as a side note, when you have that tracking and you have your photos, you know, down the road, you might decide that you want to share this. You might decide that you want to make a little bit of money while you're achieving these results for yourself. And if you get good before and after pictures, they will be gold for you. Yep. No worries. Let's not even worry about that right now. Let's get you your results. But FYI, this tracking has a lot of purposes. And so be sure that you're consistent with the product and be sure that you track your results. Gunjan. तो इसके बाद आप जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं तो मैम बता रहे हैं यहाँ पे फन भी हो कर सकते हैं आप। यू कैन जस्ट मेंशन अबाउट बिजनेस कि अगर आप इसकी ट्रैकिंग अच्छे से करते हैं तो ये आपके लिए गोल्ड है। और उसके बाद आप बता सकते हैं कि जिस तरह से मैं आपको अपना आफ्टर बिफोर दिखा रही हूँ, इसी तरह से आप भी जब अच्छे से कंसिस्ट रहते हैं, रिजल्ट को अच्छे से यूज करते हैं, तो आप उसके बाद अपने आफ्टर बिफोर दिखाकर इस बिजनेस में भी आप एंटर कर सकते हैं और आप अच्छे से मनी अर्न कर सकते हैं। तो आप ये भी उन्हें थोड़ा सा लालच दे सकते हैं कि अगर आपको रिजल्ट अच्छे से यूज करते, आप प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और आपके रिजल्ट आते हैं, तो ये आपके लिए गोल्ड है। क्योंकि अभी आप खुद पे रिजल्ट भी ला रहे हैं, कल को आप प्रोडक्ट बेचकर आप पैसा भी कमा सकते हैं। यस मैम। So looking at the portfolio of products that we have in India right now, if this person had told me that they have a little bit of gastro issues and they don't eliminate regularly or, you know, whatever, then I would say, okay, let's now put together your product package. And let me just say that I'm going to help you structure it so that you're getting some things for free. This is where you start to talk about the customer programs. Gunjan. तो मैम बता रहे हैं कि मान जैसे हमारे इंडिया में जो हमारे पास प्रोडक्ट है हमारे पास, तो मैम बता रहे हैं मान लीजिए आपसे कोई बात करता है, उससे गैस्ट्रिक इशू है या कुछ कॉन्स्टिपेशन है, एलिमिनेशन का इशू है, तो आप उन्हें बता सकते हैं आई हैव समथिंग फ्री फॉर यू। आप उन्हें कुछ ऑफर दे सकते हैं ताकि वो आपके साथ प्रोडक्ट यूज करने के लिए रेडी हो जाए। और इस तरह से आप धीरे धीरे उन्हें बिजनेस के लिए भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। यस मैम। So if I was doing this in the United States, I probably would have them get 2 bottles of Liquid BioCell Pure. But in India, I think the best thing is to have them start with a bottle of Pure and a bottle of Trim. And here's my reasoning on that. If they take one in the morning and one at night, either way, they're going to be getting the full amount of collagen, but they're also going to be getting those slenderizing benefits of the Trim. You're going to give them a product that tastes so good that they're going to get addicted to it and they're going to want it every month. So I would, for this person, I'd have them take a Liquid BioCell Pure and I'd have them take a Trim, explain the benefits,
And then I might say, you said you're having digestive issues and issues with eliminating. So I'm going to recommend, in addition to these two products, that we get you digestive enzymes, maybe carb blocker, and maybe the fiber, right? So, or you could recommend the probiotic, right? However you want, whatever you want to recommend. Show them that when they build their cart to 5, at least 2 of the items are going to be free, right? So I would go with the low cost items, because when you add them to 2 of our hero products, then the price, actually they get so much more value and they're not going to spend that much more money. Gunjan. तो नेक्स्ट मैम बता रहे हैं कि जैसे वो यूनाइटेड स्टेट में करती हैं वो लिक्विड बायोसेल के लिए सजेस्ट करती हैं, तो मैम बता रहे हैं कि इंडिया में हम लिक्विड बायोसेल और ट्रिम के लिए लोगों को जैसे अगर हम बता रहे हैं तो इसके साथ हम उन्हें कुछ ऑफर दे सकते हैं या उनसे उनकी गट हेल्थ के बारे में पूछ सकते हैं, और साथ साथ हम उन्हें बता सकते हैं कि आपको अगर गट हेल्थ है या इसके साथ साथ हम उन्हें डाइजेस्टिव कार्ब या प्रोबायोटिक जो भी उनका हेल्थ इश्यूज है उससे रिलेटेड अगर हम उन्हें 4-5 प्रोडक्ट्स का अगर हम उन्हें सेट देते हैं तो उसके साथ हम उन्हें कुछ ऑफर भी दे सकते हैं जो हमारा लो हो या कुछ प्रोडक्ट ऐसा हो जो हम उन्हें साथ में गिफ्ट दे सकते हैं। तो मैम ये बताना चाह रहे हैं कि आप जैसे कि यूनाइटेड स्टेट में करते हैं कुछ ना कुछ फ्री दे देते हैं, ऑफर देते हैं कस्टमर को जब वो 4 या 5 आइटम्स लेते हैं साथ में। यस And मैम। also, my friends, if you're setting them up for weight loss, and going to help them on their weight loss journey, you want to be sure that they are choosing at least 3 of the 5 lifestyle choices. They're going to be modifying their lifestyle with healthy adjustments that are going to help them keep the weight off for life. Gunjan. तो मैम नेक्स्ट बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपके साथ वेट लॉस के लिए आना चाह रहा है तो आप उन्हें कुछ ना पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से आपको हमारा जो ट्रिम है डाइजेस्टिव है कौन कौन से आप प्रोडक्ट्स उन्हें दे सकते हैं, किस तरह से उन्हें समझा सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देना है, पूरी डिटेल में उन्हें समझाना है कि किस तरह से आपका 90 डेज का वेट लॉस प्रोग्राम रहेगा। यस मैम। Okay, so last of all, how often do you check in with them? This is really important. You don't just give them the product and leave them on their own. You say to them, text me, message me the minute you get your product, right? So you're keeping contact. Message me. And if 2 or 3, 5 days pass, you haven't heard from them. Hi, love, have you gotten your product yet? You need to be with them on this journey and help them to really get established. Great. When are you going to start taking it? You're going to start taking it in the morning? Fantastic. Message me after you take the products. Let me know if you like the taste. Let me know how you like them, right? You are holding their hand every step of the way. Gunjan. तो मैम बता रहे हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देना है और उन्हें प्रोडक्ट देकर ये नहीं बोल देना है कि आप खुद प्रोडक्ट यूज कीजिए, तो आपको उनके टच में रहना है। आप उन्हें मैसेज कीजिए, हैव यू रिसीव्ड योर पार्सल। आप उन्हें बोल सकते हैं कि जब आपका पार्सल आए तो जस्ट मैसेज मी। आप उनसे पूछ सकते हैं आपको टेस्ट कैसे लगा, हाउ डज इट टेस्ट। आप उनसे इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं और उन्हें ये फील नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट दिया और आपका काम खत्म हो गया। आप उन्हें ये बता सकते हैं कि आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई भी इश्यू है किसी के रिगार्डिंग किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं। आप उन्हें बोल सकते हैं जब भी आपको पार्सल मिले मुझे मैसेज कीजिए, आपको टेस्ट कैसा लगा, आप कब स्टार्ट करने वाले हैं, just like these questions. Yes ma'am। Okay, and this is also when you want to say, you've taken your before pictures, right? Can you send them over to me? I want to help you track your results. I want to celebrate with you every step of the way. Can you send over your before pictures for me? So make sure that they've taken them and that you get a copy of the before pictures. Gunjan. तो नेक्स्ट मैम बिफोर आफ्टर का बोल रहे हैं कि जब आप वो प्रोडक्ट आप उनसे ले लेते हैं, आपके वो पहुंच जाते हैं तो आप उन्हें पिक्चर्स के लिए बोलिए कि वो आपके पास ये पिक्चर शेयर करें ताकि आप उनकी जर्नी है उनके साथ उनको थोड़ा ट्रैक में रहे, उनके साथ उन्हें बताते रहें कि उन्हें कैसे अब फर्क लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो मैम चाह रहे हैं कि आप भी उनकी पिक्चर्स बिफोर की पिक्चर्स अपने पास पहले से ही मंगा कर रख लीजिए और उन्हें ये फील होना चाहिए कि जर्नी में हम दोनों साथ साथ हैं। यस मैम। And then you might just send messages kind of every few days, more than you think. You should check in with them more than you think. Hey, are you being consistent with the products? Are you noticing any results yet? Right? You want to check in with them very, very regularly. And another important thing is to encourage them, continue to send them before and afters.
So of people, of other stories, share other success stories with them. So for example, I might say, hey, I'm just shooting this over to you. Here are some of the results that some of the people I work with, or that my dear friend, right? In Modere, we're a family. You can refer to anyone as your dear friend. We're a family, right? My dear friend is getting these results. Just wanted to send a little encouragement your way today. So you are dripping on them constantly. How's it going? And then you help them tweak the process, right? Gunjan. तो जब आप मैम बोल रहे हैं कि आपको आफ्टर बिफोर की पिक्चर्स लेनी है और उन्हें मैसेज करना है, डेली सेंड मैसेजेस कि आप डेली प्रोडक्ट ले रहे हैं, बी कंसिस्ट, आप उन प्रोडक्ट को कोई मिस तो नहीं किया है, तो उनके साथ आपको टच में रहना है और बीच बीच में आप उन्हें अपने कुछ पिक्चर्स भी भेजनी है आफ्टर बिफोर की। आप उन्हें ये कह सकते हैं ये किसी और कस्टमर की पिक्चर्स हैं जिन्हें इन प्रोडक्ट करने से आराम आया, प्रोडक्ट यूज करने से जिन्हें आराम मिला है, या अपने किसी फ्रेंड का बोल सकते हैं। तो उनको एंकरेज करना है आपने, ताकि वो जो प्रोडक्ट यूज करे तो पॉजिटिव रहे। और आप बीच बीच में अपने आफ्टर बिफोर की पिक्चर से कुछ भी पॉजिटिव मैसेज आप उन्हें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आप भेज सकते हैं। यस मैम। Okay. And can you see if you follow this process, people are going to stay with you. They know you care. They trust you as an expert. You're checking in with them. Now you're friends, right? And you are their health consultant. They will trust you. They will come back to you. And so you want to stay tight with them through this whole process. Now, we won't go into details on this today, but one thing I'll mention, we'll do more training on this later, is that eventually when you have so many customers, it becomes a little bit difficult to do all of this one-on-one. There are platforms where you can automate and send out messages to your customers, where you can tell them when there's a promotion. You can tell them, you can keep in touch with them, sending them before and afters. One thing that I did, even though my focus is not particularly customers, is I created a Facebook group for all of my customers, because then they share their results with each other. And I called it Deals, Promos, and Giveaways. So they knew that if they got a notification that I had posted that there's a deal or a promotion they need to know about, right? So they would then jump in and they can, they engage with each other, they share their results. You actually end up creating a community of like-minded, health-conscious people, and they support each other in their journey. Now, more on that another time, but I wanted to plant that seed. If you're listening to all of this and going, oh my heavens, I could never do all this. Trust me, if you want to attract, retain, and grow customers, we're going to talk about the grow customers in another Zoom. But if you want to keep people for life, if you want to get to the platinum black ranks and maintain them, you need to have a structure where you consistently have contact with your customers. Gunjan. तो नेक्स्ट मैम बता रहे हैं कि जब आपको कस्टमर आपके साथ रह रहा है तो उसके साथ आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो उनके साथ टच में रहना है, और उसके साथ आपको उन्हें ये बताना है कि आप उनके हेल्थ के बारे में लेकर कंसर्न है। और जो मैम बता रहे हैं कि जब आपके पास एक कस्टमर है तो आप ये सब कर सकते हैं, आफ्टर बिफोर शेयर कर सकते हैं, आप उनके साथ डेली टच में रह सकते हैं। लेकिन जब आपके पास ज्यादा कस्टमर होंगे तब आप कैसे करेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि आप एक एक कस्टमर के साथ ये सब फॉलो करें। तो उसके लिए मैम हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हम फेसबुक, जो हमारा ग्रुप रहता है एटीएम, हमारे पास रियल रिजल्ट है, इस तरह से हमारे पास जो ग्रुप रहते हैं वहां पर हम सबको लेके ले जा सकते हैं, जहाँ पर हम पोस्ट अपडेट करते रहते हैं, वहां पर उन्हें अपने रिजल्ट भी मिलते रहेंगे। तो इस तरह से वहां पर हम लोगों को ले जा सकते हैं, जिससे उन्हें हम, जैसे कि मैम ने बताया, डील, प्रमोशन और गिव अवे होता है, वहां पर वो आएंगे, वो वहां पर प्रमोशन कोड्स भी मिलते हैं, उन्हें वहां पर रिजल्ट भी मिलते हैं। इस तरह से हम लोगों को वहाँ फेसबुक ग्रुप में ले जा सकते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी हजारों लोग होते हैं, तो उनके साथ टच में रहेंगे और उन्हें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, जिससे वो सेटिस्फाइड भी रहते हैं कि वो राइट ट्रैक पर हैं, और एक उन्हें अपनी जैसी कम्युनिटी मिल जाती है वहां पर। तो मैम ये भी बताना चाह रहे हैं कि जब आपके पास ज्यादा कस्टमर हो सकते हैं तो हम इस तरह से फेसबुक पर भी उन्हें ले जा सकते हैं, जैसे कि मैम ने बताया है कि आपको अट्रैक्ट करना है, फिर कस्टमर को रिटेन करना है, किस तरह से ग्रो करना है, जो मैम हमेशा हमें बताते हैं। यस मैम। And so now you have this big group, this big funnel of customers. Imagine when Modere launches a new product, you go out to them, they know you, they like you, they trust you, and you say, oh my gosh, you guys, you got to get your hands on this brand new product we're launching. Can you imagine when you have hundreds of people that order on the spot because you've taken the time? I know it sounds tedious, but when you take the time, there will be a moment
when you're doing very little work, very little hands-on, and you have cultivated loyal customers who will buy every time you say, buy this. Gunjan. तो जब मैम बता रहे कि आपका ग्रुप बड़ा हो जाएगा, आपके पास ज्यादा कस्टमर हो जाएंगे, आप फेसबुक पर आपका कस्टमर देखते रहेंगे कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। सपोज कल को हमारे नया प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं या हमारी प्रमोशन आती है, डेफिनेटली कस्टमर पहले आपसे बात करेगा, क्योंकि जो आपका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है वो आपके से ही बात करेगा, जो आपने बिलीफ सिस्टम अपना क्रिएट किया है। तो यही आपको बेनिफिट रहेगा जब भी कुछ नया मार्केट में आएगा या नया कुछ लॉन्च होगा, तो आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया था उस कस्टमर पे, जब वो फेसबुक पे आपके साथ टच में रहेगा, तो वो आपके साथ ही पहले वो बात करेगा कि इस तरह से प्रमोशन आया, इस तरह से प्रोडक्ट आया है, तो मैं लेना चाहता हूँ। तो वो आपका जो ट्रस्ट है वो वहीं पर बिल्ड रहेगा और कस्टमर आपके साथ टच में रहेगा। यस मैम। All right, my dear ones. First of all, let's thank Gunjan for doing an amazing job at translating. There is nobody like her. She is such a good teacher. She is so articulate. Thank you. Let's thank her. And then I just want to say thank you to our international guests. Thank you so much, Brad, for being here. Thank you, Lee. Thank you, Sean. So good to see you always. Have you guys here. And Harish, Rajnish, Moni, Mahendra Bhai. It's so good to see you. I haven't seen you in a little while, Mahendra Bhai. Saroj, of course. Moni is here. Shakti is here. Raj is here. I just thank you. Hi, Harish. It's so good to see you guys. Aradhana, it's so good to see you. So let's finish the way that we finished, because all of these trainings are designed to elevate you. All of these trainings are designed to get you to the top. And as we promise each other, we're holding each other's hands. Nobody will be left behind. We will provide whatever we need together, because together we rise. Are you ready to finish this meeting today in the way we always do? Please unmute yourself. Let us see you if you can. And my friends, together we rise. Together we rise. Shine. Together we rise. Together Together we we rise. Together we rise. Together we rise. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. See Thank you you so on much. Monday. ma'am. Thank Thank you, you, John. ma'am. You're amazing. Thank you, Love Margie. you Great guys. training. Thank Margie. you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Love you. Love you. Love you. Bye.